अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम बिकर। मैम, हम एक सीरीज स्टार्ट करना चाहते हैं इसकी भी कि जो अब आप जिसमें बात कर रही थी मुख्तलिफ वीडियोस के अंदर कि हमें सेल्फ लर्निंग करनी चाहिए या वोकेबलरी की तरफ से आना चाहिए। हम्म। तो अब वोकेबलरी में जो हमने सीखना है तो वो सारी बात आपने सिखाना है, ठीक है। यस। तो हमें कुछ वर्ड्स आप बता दें जो हम लाइक यानी डेली बेस पे हमें कुछ ना कुछ वर्ड्स बता दिया करें, ये अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऑलराइट फाइन। सो लेट्स टेक स्टार्ट अप। मैं पहले एक दो वर्ड्स आपको बताऊंगी और फिर एक आधा वर्ड मैं आपके लिए भी छोड़ के जाऊंगी दैट यू पीपल हैव टू लाइक टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, राइट? ओके। सो द फर्स्ट वर्ड दैट आई वांट टू से, नॉर्मली ऐसा होता है कि हम किसी भी सामने वाले बंदे, हमारे फ्रेंड्स हमें गुदगुदी कह रहे होते हैं एंड वी डोंट नो द इंग्लिश ऑफ गुदगुदी ना, दैट वर्ड शुड बी से। So the accurate word we have to say for gudgudi is a tickle. So we call it that that person is going to do with a tickling. So like that person is doing gudgudi on you, right? So Tickle, right? And the next word is, for example, आपने देखा होगा बाज़-औक़ात कोई हमसे बात कर रहा है and we don't want to talk to that person ना, और वो वहाँ पे बैठा हुआ बोल रहा है on the opposite side of you और आप इस तरह से कांधे उचकाते हैं, right? So when you guys are just performing this kind of gesture, that is called shrug. SHRUG, right? Now the question that I want to drop in the comment for you, let me know के squeeze का मतलब क्या होता है, right? So that would be on you. ऑलराइट मैम, थैंक यू।